एक विशाल आयोजन, न्यूट्रास्यूटिकल्स के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि। 10th न्यूट्रा इंडिया समिट 2015 का आयोजन 18 और 19 मार्च को मुंबई के होटल द ललित में किया गया। प्रोग्राम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन द्वारा किया गया। प्रोग्राम में देश विदेश के कई डिग्निटरीज और डेलीगेट्स ने पार्टिसिपेट किया। इस समिट में स्पीकर्स ने न्यूट्रिशन की इम्पोर्टेंस पर प्रकाश डालते हुए कहा, I had a dilemma whether I should speak as a medical person where I have some experience. Should I talk with some familiarity with nutrition? And I was reminded of one of the things that had come to my mind. Cooking is an art. I don't think I've learned it well. Diet is a culture. I think India has a very rich culture. And nutrition is a science. I think together, all the three can shape what I've written here, Pushta Mulgi Tushta Ayu. Pushta is not in terms of obesity. Pushta is a healthy nutrition. And Tushta Ayu is a healthy life. समिट में आए सभी गेस्ट का मोमेंटो देकर स्वागत किया गया। चीफ गेस्ट डॉक्टर R.A. माशेलकर ने न्यूट्रा समिट की हिस्ट्री, इसकी इम्पोर्टेंस और इंडिया में इसके बढ़ते प्रभाव के बारे में बात करते हुए कहा, A decade ago, India was being referred to as a third world country. Today, it is being referred to as possibly the third most powerful country in the world. Potentially. The potential is still with us, by the way. So that's a big change that has taken place. And therefore, development and growth are going to be the two crucial issues before us. And therefore, innovation has to be written all over our thinking. I always say, the I in India must stand for innovation, not for imitation. इस समिट का एक और इम्पोर्टेंट पार्ट था क्वेश्चन आंसर सेशन। Measure the return on investment when we take science as a means to take it to the market. So how typically you think organizations should measure return on investment? That, I think, is the challenge really that needs to be surmounted. With that, you need to convert that simple science into complex science when you talk to formulators and your customers. And that's the other thing that needs to be invested in. सभी प्रोमिनेंट स्पीकर्स और डेलीगेट्स ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। न्यूट्रा समिट बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये एक जगह पे लाता है इंडस्ट्री को, गवर्नमेंट रेगुलेटर्स को और डॉक्टर्स को, न्यूट्रिशनिस्ट को। और ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं एज डॉक्टर्स, कि हमारे को जो प्रोडक्ट्स अवेलेबल नहीं हैं वो हम शेयर कर सकते हैं इंडस्ट्री के साथ। इंडस्ट्री अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकती है रेगुलेटरी बॉडीज़ के साथ। तो ये एक तरह से एक पॉलिसी मेकिंग सिचुएशन है जहाँ पे सब लोग एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे को अपनी प्रॉब्लम समझाते हैं और अंडरस्टैंड कराते हैं। इस तरह की जब कॉन्फ्रेंसेस का आयोजन होता है तो इन न्यूट्रास्यूटिकल्स के बारे में वैज्ञानिक जानकारियाँ, साइंटिफिक जानकारियाँ लोगों तक पहुँचती हैं और फिर आगे बढ़ने का मौका मिलता है। क्योंकि जब लोग जान जाएंगे, खासकर आजकल के ज़माने के जो नए नौजवान पीढ़ी है जो विज्ञान में विश्वास करती है, तकनीकी जानकारियों में विश्वास करती है, उन्हें अगर इन चीज़ों के बारे में पता चलेगा, उन्हें अगर ये पता चले कि हल्दी जैसी चीज़ जिससे शरीर की काफ़ी बीमारियां दूर हो सकती हैं, उसके पीछे विज्ञान क्या है, हल्दी में क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, हल्दी कैसे काम करता है, शरीर को रोगों से कैसे मुक्त करता है, शरीर को कैसे स्वस्थ रख सकता है, तो वो हल्दी का उपयोग करना शुरू करेंगे। My name is Samar Ghosh. I'm the Associate Director Marketing for Nutraceuticals from Sanofi India Limited. I look after the nutraceutical projects for India as well as in South Asia. And in today, definitely Nutra Summit is really the theme. I got attracted towards that because this is the first time I could find out there is a unique blend with academia and industry people and researchers as well as
different people who have come, basically nutritionists and dietitians, even doctors, clinicians, and that actually helped and going to help us in a much better fashion from concepts to application, and what exactly from illness to wellness continuum, what we would like to get it, the advantages of nutraceutical products. प्रिवेंटिव हेल्थ केयर और न्यूट्रास्यूटिकल को अगर हम इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं तो इस जो बढ़ता हुआ जो एपिडेमिक ये डिज़ास्टर है इसको हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो आज न्यूट्रास्यूटिकल जो प्रोडक्ट्स है, न्यूट्रास्यूटिकल सेगमेंट है, ये एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है आज के समय में और आने वाले समय में एक हेल्दी इंडिया को बनाने में, और इस अवेयरनेस को हमें जन जन तक पहुंचाना है। 10th न्यूट्रा इंडिया समिट के दूसरे दिन का टॉपिक था गर्ल चाइल्ड एंड वीमेन एम्पावरमेंट लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन। Today we have number of norms where we find girls and the boys have to really have different proportion. However, I think what is happening to our society is that we are not really looking at girl as an asset. Now we need to look at girl as an asset. I have two daughters, so obviously when you look at them, you find girls have assets. They are assets for tomorrow because they would like to really take the society as well as generations further. Similarly, when you look at their nutrition situation in India, a lot of girls are today malnourished, undernourished, and also suffering from number of diseases. And that's why you find let's say, menstrual issues, during puberty issues, during even after marriage, before marriage, during pregnancy, after pregnancy, you have a lot of things. If you look at Indian culture, before pregnancy or during pregnancy, before the childbirth, the new mother is being nursed so well. Everybody looks after her. Look at ourselves. When the child is born, the whole focus changes to child, not to her. And so you find there's so much neglect. As a result, you find that we need to look at this children or child or girl child very specifically. इस समिट में भाग लेने के लिए देश के हर कोने से लोग आए। इस समिट में आयोजित इम्पोर्टेंट इवेंट्स में शामिल था यूरोपियन हाई इंजीनियरिंग डिजाइनर ग्रुप डॉक्यूमेंट का लॉन्च। लॉन्चिंग ऑफ पब्लिकेशन ऑन न्यूट्रास्यूटिकल्स, न्यूट्रिशनल्स एंड नेचुरल्स बन गई इस समिट की एक महत्वपूर्ण इवेंट। इस मौके पर डॉक्टर अशोक वैद्य ने इंडियन कल्चर में इम्पोर्टेंस ऑफ फूड के बारे में बताते हुए कहा, India has longest history, cultural history of proper food and nutrition. Annat bhavanti bhutani parjanyad anna sambhava karmat bhavanti parjanyo karma yagna samuchaya. What a definition in Gita of how food is central and it actually emerges from your yagna. So there is a collective destiny by our deeds. And if we have vyapak pragnaparad in the nation, vyapak dushkarma in the nation, then also anna suffers. So ahara shuddho sattva shuddhi, shuddhe sattve dhruva smriti. This is from Chandogya Upanishad. This Bharatiya ethos to stress has been recognized for 3,000 years. We have something called Dinacharya, that is daily regimen, Ritucharya, seasonal regimen, and Achar Rasayana. Achar itself is called Rasayana. Achar means how you maintain your mental hygiene, how you live your life with Sattva Gun and not carried away by Rajogun and Tamogun. This integral approach is also applied to nutrients, because nutrients which are Rajasic, which are Tamasic, and which are also Sattvic have been classified. न्यूट्रा समिट्स का प्राइम अट्रैक्शन था न्यू फूड्स एक्सपो। Namaskar, my name is Ajay Khanna from Herbalife India. Welcome to the 10th Nutra Summit in Mumbai. I think this is a very important event. ये जो event जो यहाँ पर है ये न्यूट्रास्यूटिकल की जो अवेयरनेस के लिए है, जो आजकल की जनता है जो फिटनेस की तरफ जा रही है, वेलनेस की तरफ जा रही है, एंड जो न्यूट्रास्यूटिकल है, they play a very important role in today's everyone's life as far as the wellness is concerned, healthy active lifestyle is concerned. Okay, and आजकल जो लोग हैं वो ज़्यादातर मेडिसिन बॉक्स को छोड़कर अपने किचन बॉक्स में से इंग्रेडिएंट्स को अपनी वेलनेस की तरफ लाना मांगते हैं।
एंड ये जो प्लेटफॉर्म है, न्यूट्रास्यूटिकल्स का जो प्लेटफॉर्म है, दिस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल एज फार एज द वेलनेस इज कंसर्न, बिकॉज आज क्या है, आजकल की जो जनता है, दे आर बिकमिंग वेल अवेयर ऑफ wellness. They're becoming well aware of fitness. This is Karnveer Mundre and I'm the director of Atharva Life Sciences Consulting Private Limited. And we are here we are a market research consulting firm, and we come out with data and information about various sectors, including the nutraceutical and functional food sector. The nutraceutical and functional food sector is one of the most critical areas in preventing disease and promoting good health in the world today. It is more than $1 billion industry, and it is really being used a lot in the mainstream medicine as well to promote and to promote good health and to avert diseases. इस समिट में वेरियस कैटेगरीज में स्पेशल कंट्रीब्यूशन के लिए पार्टिसिपेंट्स को अवार्ड्स भी दिए गए। समिट में पधारे डॉक्टर वी प्रकाश ने न्यूट्रा समिट की हिस्ट्री और इसके फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस के बारे में अपने विचार कुछ इस तरह व्यक्त किए। A holistic approach has been taken in this 10th Nutra to consolidate all that has happened in the last 12 years of 10 nutraceutical summits, including this one, traveling between Bangalore, Mumbai and New Delhi, and it has been a great demand from other cities. But somehow, these three cities have been fortunate to have nutrition and the Nutra over the last 12 years. However, we also see at this point of time a tremendous amount of potential in the 11th Nutra and the 12th Nutra. And probably the 13th Nutra will never be celebrated. You know why? Because that gets merged into the International Congress of IU4. अंत में वोट ऑफ थैंक्स द्वारा कार्यक्रम का समापन हुआ, लेकिन इस समाप्ति के बाद भी जन्मी नई आशाएं न्यूट्रा जगत के लिए। So I am deeply thankful to all these speakers, all the experts who have come here. I am deeply thankful to all the exhibitors who have made this Nutra India Summit a very strong B2B program. Our New Foods Expo, though small, has been a very, very engaging platform for the participants, and the feedback that I have received from many of them has been very encouraging. We would like to walk on this path and move forward. न्यूट्रास्यूटिकल इंडस्ट्री में नई संभावनाओं, नई आशाओं के साथ इस 10th न्यूट्रा इंडिया समिट का सफलतापूर्वक समापन हुआ।